नमस्कार मुहूर्त দিব বিচাৰিছো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে এনডিএ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ তৰফৰ পৰা সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ মন্তব্য কৰা হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে এইবাৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয় কিয় হ'ল বিজেপি খণ্ডৰ্ভত মোদী খণ্ডৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত এনডিএৰ চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে মোদীক লৈ এবাৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে হিন্দী মৰ্চাৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ কাৰ্যকালো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব মোদীয়ে এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ শোচনীয় নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে বিজেপিৰ ভেটি স্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতায়ো মোদীক নৎসাত কৰিছে আৰু মোদীৰ বাৰাণসীতকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ৰায়বেৰেলীত ভোটাধিকাৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ কাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব মোদীয়ে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এনডিএৰ চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে মোদীক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী গৌৰৱ গগৈৰ এটা ডাঙৰ খবৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ মন্তব্য কৰা হৈছে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 5 বছৰ কাৰ্যকাল এবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিতে ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে কি কৈছিল মোদী খণ্ডৰ্ভত বিজেপি খণ্ডৰ্ভত এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম बरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আছিল গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ এইবাৰ 5 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যৰ পাছতে দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ কাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব মোদীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয় কিহৰ ইংগিত দিছে তা প্ৰশ্ন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে কি কৈছিল পুনৰবাৰ ফুল পেটৰ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে মোদীয়ে সমান্তৰালভাৱে এনডিএ চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে মোদীক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু হিন্দী মৰ্চাৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিতে ব্যাপক চৰ্চা চলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব মোদীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ শোচনীয় নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য যেহেতু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি পুনৰবাৰ গৌৰৱৰ মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें
तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप